भूते भक्ति विदान स्वामी इति नमानि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादिलाददायिने हिरण्यकशिपूर्णशवा शिवटङ्का नखालाये इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा नरसिंह महेशरणं प्रमतै तब कर कमल बने नखाम अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपु अनुभिंगा केशव दीता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जयो नरसिंह देव जयो नरसिंह देव जयो नरसिंह देव जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज। जय हो प्रभुपाद प्रभुपाद जय हो शिला प्रभुपाद जय हो गुरुदेव गुरुदेव जय 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। You are on mute, Mataji. Thank you, Bharti, for Narasimharti. Would you like to say a line on why we sing Narasimharti? Since Narasimha Chaturdashi aa bhi rahi hai on 4th May. Yes. So, a little bit on the significance. Yeah. Narasimha Dev is the incarnation of Vishnu only. He came to prove itself कि भगवान के लिए भक्त की इम्पोर्टेंस कितनी है। प्रहलाद महाराज के लिए वो आए थे सिर्फ एक छोटे से बच्चे के लिए प्रूव करने। ही माइट नॉट कम कुड कम ही कुड हैव सेंट समबडी एल्स बट वो खुद आए इंकारनेशन होके। जैसे उनको था कि पिलर में मतलब कि शाम को नहीं आएंगे आधा नर आधा पशु उसमें होंगे तो ही केम एग्जैक्टली जस्ट फॉर द डिवोटी। प्रहलाद महाराज के लिए वो सिर्फ एक उस रूप में आए। एंड वी वर्शिप नरसिम्हा देव टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम आवर हेल्थ एंड टू प्रोटेक्ट आवर भक्ति ऑल्सो कि हमारी भक्ति को इस मटेरियल वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करें और हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करें क्योंकि इफ यू विल बी हेल्थी विल बी फाइन देन वी कैन डू आवर भक्ति प्रॉपर्ली। Okay, thank you. Hare Krishna. So Manisha is comfortable with English or Hindi or mixed or what? What is she more comfortable with? आपकी सही Hare Krishna Mataji. I'm comfortable in both the languages, whichever you say. Yeah. Okay. Hare Krishna. Okay, thank you. So, can somebody open the verse in Veda base? And that we are doing today. And what verse did we do last time? Yes, it's a good idea, Hema, that we can show the PPT while singing the Aarti. We are doing Bhagavatam or Bhagavad Gita today?
Today is Monday, right? Bhagavatam. Yeah, Bhagavatam. Bhagavatam. 8.8 किया था ना हमने 1.8.8. No, Mataji, we did till 1.5.11. 5.11 right. आपने verse 8.8 लिखा है? वो I अनु ने हाँ गीता का लिख दिया, भगवत गीता का. Oh, sorry, sir. Yes, yes. Okay. Oh, wait, I'll share. 1.5.7, na? Please. no 1.5.12 से start Well, करते हैं. 12 will Yeah, going to start. Yeah, give me a second. माता जी आप मुझे वो एडमिन का शेयर का ये देते हैं. Correct, too. शेयर का तो ऑन ही होता है. It's for On- everyone. Yeah. Okay, yeah, okay. 5.12. Yeah. Here. Hema, we got that. Yeah. Thank you. So, one volunteer to speak. Naishkarmyam api achyuta. Anu, No. I'm sorry. Sorry, Hemangini, आप बोल रहे थे. Please continue. नैष्कर्म्य अपि अच्युत भाववर्जितं भाववर्जितं न शोभते ज्ञानम् अलम् न शोभते ज्ञानम् अलम् निरञ्जनं निरञ्जनं पुनः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे सुखः पुनः शश्वत् अभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यद् अपि अकारणं न च अर्पितं कर्म यद् अपि अकारणम्. Can read the translation. Hemangini. Hare Krishna. Knowledge of self-realization, even though free from all material affinity, does not look well if devoid of a conception of the infallible God. What when the use of creative activities, which are naturally painful from the very beginning and transcend by nature, if they are not utilized for the devotional service of the Lord? Wow. Does anyone want to share anything about this verse? जितना आपने translation में आपको जो समझ में आया हो? Such a powerful statement. किसी को attempt करना है? Because it's काफी clearly बताया गया है. Somebody? Oh, I can't hear. Can you hear me? Is somebody speaking? Okay, I can't hear anything. Is somebody speaking? Nobody speaking? Mataji, I think it's Vinitama Mataji's audio was, she was not muted. It must be her background noise of the house. Oh, Maybe. yes. Acha, so aap log, you're still here reading the purport, is it? Acha, I thought somebody is speaking and only I'm not able to hear. No. We were just trying to read the meaning of it. No, I'm just saying, I'm not asking for an explanation. वो तो हम discuss करेंगे अभी. हाँ. मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ के आपको कोई क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ Okay. में आ रहा है या कुछ आपके फर्स्ट थॉट्स या फीलिंग्स क्या हैं? ओनली द ट्रांसलेशन. हम इन डेप्थ में बाद में जाएंगे.
You can take 60 seconds. Can I try? Yes, please. Here, Prabhupada, in this translation, it's showing that knowledge of self-realization is if we know our original constitution position, that we are not this body, we are the soul. Agar ye knowledge, if we have this knowledge, and if that knowledge we are not using for the use of devotional service or to the pleasing to the God, then there is no use of such knowledge. Still, it is still can be look as a creative activities. Results can be looked as a creative activities, but still this if till the time we are not using this knowledge for the satisfaction of the God, then it's the waste. Yes, to a large extent, yes. What you're saying is right. Thank you, Himangini. YG's hand is up. Yes, YG? Hare Krishna, Mataji. I think two things that I wanted to share. One is it devoid of the conception of infallible God. So here, I think the difference between the Brahma Jyoti and an actual form of God. So there is one actual form of God that we have to pray to. And second, I was thinking about karma, akarma, and vikarma, because every activity that we do should be Krishna centric. So, and we have to realize that. Hare Krishna. Well, thank you. Thank you so much. We have so many Vidushis in class now. Almost all of you. So, let me simplify it further. जो मुझे समझ में आया एकदम से पढ़ते ही. Knowledge of self-realization. इस समय हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं हम सबके साथ? क्या डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं? That definitely it's not about what is the latest gupshup of Gurgaon city. Gram katha सुनने के लिए तो नहीं इकट्ठे हुए. Neither the latest fashion scenario or the entertainment scenario. हम कुछ knowledge of the soul, knowledge of self-realization के बारे में सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं, correct? और इतना हम इसमें अपना समय लगाते हैं और इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं और इकट्ठे मिलते हैं और तो in this statement they are saying that knowledge of self realization भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं या उसके बारे में भी अगर आप पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे बड़ी कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है और अगर इसके बारे में भी अगर आप मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं, इवन दो फ्री फ्रॉम ऑल मटीरियल एफिनिटी, अगर आप बिल्कुल किसी मटीरियल ऑब्जेक्टिव की वजह से भी नहीं मिल रहे, प्योरली योर गोल इज स्पिरिचुअल एंड सेल्फ रियलाइजेशन, फिर भी अगर इसमें सेवा टू गुरु साधु एंड शास्त्र नहीं है तो दिस इज एज गुड एज मटीरियल एक्टिविटी. इट इज यूजलेस. सेल्फ रियलाइजेशन की डिस्कशन ऑल्सो. So, you know how important aspect of service is, but devotional service, not any other service, because हम service तो बहुत सारी कर रहे हैं. So much of charity work that's going on, so much of dog charity that's going on right now. If you see the WhatsApp messages, you know, people are shedding their money, blood, effort, everything to take care of those poor dogs. Never mind अगर वो डिनर में चिकन खा लेते हैं, वो कोई बात नहीं. चिकन के लिए इतना प्यार नहीं है, डॉग के लिए बहुत ज्यादा प्यार है. राइट लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में भी अगर आप डिस्कस कर रहे हैं या उसमें भी अगर आपने अपना जीवन लगा दिया फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल एफिनिटी, स्टिल इट डज नॉट लुक वेल. ओके, आई हैव टू. What then is the use of fruitive activities which are naturally painful from the very beginning and transient? Transient matlab temporary.
by nature if they are not utilized for the service of the Lord. मतलब आप in short, अगर आप as a child आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ के सारे धर्म निभाए, अच्छे से स्कूल गए, कॉलेज गए, अच्छे मार्क्स लिए, डिग्री ली, फिर आपने जॉब बहुत अच्छी तरह की, जो भी आपसे एक्सपेक्टेशन थी, फिर आपकी शादी हो गई, फिर आपने अपनी गृहस्थी बहुत अच्छी तरह संभाली, फिर आपने अपने बच्चे भी बहुत अच्छी तरह संभाले, सास ससुर को बड़ी अच्छी तरह संभाल लिया, हस्बैंड को भी संभाल रहे हैं, सब कुछ, यू नो, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. फिर आप इनकी शादियां भी कर रहे हो और आप ये सब कुछ कर रहे हो. ओके, दीज आर फ्रूटिव एक्टिविटीज, राइट? तो वो क्या बोल रहे हैं, दीज आर नेचुरली पेनफुल. है ना, ये सब सेवा ही है. व्हाट इज ऑल दिस? What is all this? Seva, isn't it? Because we have to go through lots of inconveniences, lots of mental trouble, physical trouble. लेकिन हम इसको एक सेवा भाव से करते हैं कि मेरी ड्यूटी है, मुझे ये मेरे कभी पेरेंट्स की तरफ ड्यूटी है, कभी हस्बैंड की तरफ ड्यूटी है, कभी बच्चों की तरफ ड्यूटी है. तो ये सारे जो हमारे ड्यूटीज हैं सो कॉल्ड, they are naturally painful from the very beginning. Not only that, they are temporary by nature. So आगे जाकर there is one verse in Srimad Bhagavatam where Sukdev Goswami will say Shram eva hi kevalam. क्या आपने ये काम तो बहुत सारा किया, but this is keval काम, shram, hard work. If the central point of all this service is not service to the Supreme Lord, then my dear friend, we are sorry, your karmic bank balance will still be somewhat empty. So, how do you feel after hearing that? Because हमने अपनी आधी उम्र तो गुजार दी, हम सब midlife में इस समय हैं, isn't it? Half the life is gone, आधी बची है, मतलब we don't know कितनी बची है, we hope आधी बची है. And if somebody tells you whatever you've done so far is shram eva hi kevalam, how what will that make you feel? Everybody is silent. Manisha कुछ कहना चाहेगी? Hare Krishna Mataji, is it divided into two parts? I don't know this explanation. I'm not, though I've understood the concept, I have understood what we are discussing here, Yes. but I think these two, I'm not able to relate it. Which two? Like the first line says, the knowledge of self-realization, even though free from all material affinity, does not look well if devoid of the conception of the infallible, that is God. That means जब हम self-realization, क्या मैं इसको आपको समझाते हुए समझ सकती हूँ? So what I can understand from reading this sentence is when we are in the process of realizing the self. So even though that knowledge of, that process of understanding and doing self-realization is free from material affinity, but it will not look well if it is devoid of the actual conception of God. अगर हम उनको ना मान के केवल self realize में busy हैं, so we are not heading towards the right direction. So this is one aspect. And फिर जब हम already, when we are engaged in fruitive activities which are obviously painful from the scratch, from the initial point, as you said, so and transient by nature, if they are not utilized for the devotional service of the Lord, तो क्या मतलब, I mean, Okay, so let's read the purport. हाँ, As referred to above, not only ordinary literatures devoid of the transcendental glorification of the Lord are condemned.
but also Vedic literatures and speculation on impersonal Brahman, which are devoid of devotional service, are condemned. So, पहली line से, let me explain what the first line means. It means के जो तो materialistic literature है, nothing to do with you as a soul and भगवान, उससे related नहीं है, fiction. बहुत literature है इस वक्त. गूगल पे चले जाओ, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप चले जाओ, there's a lot to read which is not related at all to the subject matter of God or the soul. तो ये सब तो anyways is junk. He's saying even Vedic literature, that Vedic literature is also junk, which is not connecting you to the service of the Supreme Lord. That's a very, very heavy statement. क्योंकि वेदों के नाम पे लोग बहुत कुछ फॉलो कर रहे हैं. I met someone 3-4 years back when I just recently shifted दुबई से. तो उनके हस्बैंड हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि एक छोटी सी किताब थी उनके पास. तो उस किताब को वो मुझे दिखा रहे थे और कहते हैं ये देखिए इस किताब में वो सारे वर्सेस ऑथर ने इकट्ठे करके डाले हैं which proves कि हमारे ऋषि मुनि बीफ खाते थे. ये देखो वैदिक प्रूफ है, वेदों में लिखा है, ये देखो वैदिक वर्सेस हैं, ये नंबर है. एंड हमारे ऋषि मुनि जब हवन करते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ कुंड में जानवरों को डालते थे, उसको खा लेते थे बाद में. So there are lots of people sitting outside misinterpreting the Vedas, printing books and quoting the Vedas to support their asuric concepts of life, which has no basis. So all of that is condemned. Agar usme service nahi hai to the Supreme Lord. You know, this was a very important, this is a very, very strong statement, isn't it? This is what I was trying to bring your attention to. Okay, second line. When speculation on the impersonal Brahman is condemned, then what to speak of ordinary fruitive work, which is anyways not meant to fulfill the aim of devotional service? आया ये समझ में कि जो हम कर्म कांड कर रहे हैं, जो हम अपनी ordinary life जी रहे हैं, full of the 4 propensities, जो जानवर भी करते हैं. क्या करते हैं? Eating, mating, एक एक बताएगा. Eating, mating, come on, it should be on the tips. Sleeping. Yes. Sleeping. चारों कौन से हुए ये? 3 ही बताए आपने, चौथा? Making merry. No, that's the same thing. defending, Mataji, defending. Defending, eating, sleeping, mating, defending. ये 4 चीजें जानवर भी करते हैं और इंसान भी करते हैं. इसके अलावा अगर हम कुछ और कर रहे हैं तब हम इंसान कहलाएंगे, बट अगर हम यही चीजें कर रहे हैं then we are as good as द्विपाद पशु. शास्त्र उनको कहता है कि ये भी पशु ही हैं, बस 2 पैरों वाले पशु हैं. द्विपाद पशु. ठीक है. तो जो हम एक लाइफ जी रहे हैं जिसके बारे में हम इतना सोशल मीडिया के ऊपर अपनी स्ट्रगल पोस्ट करते हैं, यू नो, ऑल द हार्डशिप्स दैट आई वेंट थ्रू, ऑल दैट इज एनीवेज taking us towards hell anyways, because you're not doing anything for the soul, or you're not doing any service to the Supreme Lord who has created you. तो वो तो condemn है ही है. But even if you are trying to become a ज्ञानी, अगर आप ज्ञान योग को यूटिलाइज कर रहे हो, योग सिद्धियों के थ्रू आप इम्पर्सनल ब्रह्मन को अटेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो इवन दैट इज रिजेक्टेड. क्योंकि उसका फाउंडेशन क्या है कि भगवान पर्सन तो है ही नहीं. भगवान इज नॉट अ पर्सन, ही इज इम्पर्सनल. और अगर ही इज अ ब्रह्मन, तो इम्पर्सनल ब्रह्मन से क्या मतलब है
कि मैं उनका दास नहीं हूं, मैं उनके बराबर हूं, और मैं उनमें लीन हो जाऊंगा, मतलब उनके बराबर हो जाऊंगा. इसीलिए इम्पर्सनल ब्राह्मण इज कंडेम्ड. What is the difference between the personal form of the Lord and the impersonal form of the Lord? Impersonal means he does not have a form, correct? So this nature is a very good example, क्योंकि इसमें भगवान का कोई फॉर्म तो है नहीं. इट इज अ जनरल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. यही कहते हैं ना सब, मदर नेचर है, जनरल, आया सब भगवान से ही है, नेचर भगवान नहीं बनाई है. लेकिन दिस इज एन इम्पर्सनल फीचर, इट इज जस्ट एन एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, करेक्ट? सो जब आप भगवान को एक पर्सन नहीं समझते, जब आप सिर्फ ये समझते हो कि ये सारी दुनिया उनकी एनर्जी है और यही भगवान है, तो इसमें हमारी टेंडेंसी क्या आती है? इसको एंजॉय करने की, इसको भोगने की, सेवा की टेंडेंसी नहीं आती, सर्विस टू द लॉर्ड की फीलिंग नहीं आती, अनलेस यू कंसिडर द लॉर्ड एज अ पर्सन. डज इट मेक सेंस? और अगर आप एक सेवक की मेंटालिटी से नहीं जी रहे, भोगी की मेंटालिटी से जी रहे हो, देन व्हाट एवर यू आर डूइंग is condemned. बड़ी से बड़ी सैक्रिफाइस भी अगर आप उसमें कर रहे हो तो. Okay? So such speculative knowledge and fruitive work cannot lead one to the goal of perfection. Fruitive work, in which almost all people in general are engaged, is always painful, either in the beginning or at the end. Fruitive work से मतलब है हमारी लाइफ, जो हम एक ordinary life without God consciousness, हम एक ordinary life जो जी रहे हैं, that is always painful. It can be fruitful only when made subservient to the devotional service of the Lord. In the Bhagavad Gita also, it is confirmed that the result of such fruitive work may be offered for the service of the Lord. Otherwise, it leads to material bondage. The bona fide enjoyer of the fruitive work is Krishna, and thus, when it is engaged for the sense gratification of the living beings, it becomes an acute source of trouble. So, हमें ये जो संसार मिला है, हमें हमारी फैमिलीज मिली हैं, जो भी हमें पेरेंट्स मिले हैं, हमें एक सोसाइटी मिली है, ये सारी फैसिलिटीज हमें मिली हैं so that we can use them in the service of the Supreme Lord, जिन्होंने इन सबको बनाया. तो हम सब ने मिलकर एज अ टीम वर्क वी हैव टू ऑल एंगेज इन सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड, है ना? जीवर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास. तो अगर हम कृष्ण के दास बनके इन सब फैसिलिटीज को यूज करें, देन यू विल नॉट गेट एनी रिएक्शन. आपका कार्मिक बैंक बैलेंस जीरो ही रहेगा, है ना? डोंट वी, दिस इज वन बैंक बैलेंस दैट वी वांट जीरो. We don't want it to increase. All other bank balances we want कि भरे और बढ़े और बढ़े. What is that called? उसमें cumulative interest. Anu knows better. This is her subject matter. Compound interest हो जाए, है ना? Compound हो जाए वो. आज इतना डाला and then it becomes, multiple times more in a few years. But karmic bank balance we would want कि वो जीरो के बदले माइनस में ही चला जाए. We don't want anything because we don't want to suffer the reactions of our karma. Correct? So the only way not to suffer the reactions of your karma is to live with the mentality of Anu. You are still muted. Oh, I was typing something, so I missed out to listen to it. Sorry, can you say that again? Who heard the question? कौन बोलना चाहेगा? Yeah, I Mataji. In the service of Lord. Yes. आप अपना कार्मिक बैंक बैलेंस तब जीरो कर सकते हो जब आप भगवान की दी हुई सभी फैसिलिटीज को एक सेवक की मेंटालिटी से यूज करते हो कि ये मैं नहीं, मेरे लिए नहीं है. They don't belong to me anyways. I'm just the caretaker. I'm the caretaker of these children that have been given to me. I'm the caretaker of this family life, of all the facilities जो मुझे family life में मिली हुई हैं. ये I'm their caretaker.
And it is my duty to use them in the service of the Supreme Lord. Then whatever you are doing, even as simple an activity as eating and drinking, will not bind you in karmic reaction. Otherwise, even the most basic and simple activity of eating is binding you with more and more karma. And that's why people wonder after a few years कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया. I was living such a simple life, and where from did this backlash come? ये मेरे साथ क्यों हुआ? Well, they don't have the right knowledge. They're living in ignorance, so they don't know that what kind of activities can bring karmic reactions to them. Does it make sense? Is this point clear? Is this verse clear? Any questions? Hamari new participant Raj. Manisha, I'm not Yeah. sure. how Hare much- Krishna Mataji, yeah, I'm listening. I'm getting also. You are very true. Whatever we are doing in the service of Lord. If we keep this feeling in mind, that really, really helps us. That really is so nice. That Okay. saves us. That saves us from the punishment of karma, Right. of negative activities. True. Very true, Mataji. Very true. So, इसमें please note that Naishkarmyam, self-realization, even self-realization or even Vedic knowledge or Vedic activity also will bring you karmic reactions. Don't just think that anything Vedic works and you will not get in. But that's not the case. Even if it is Vedic and you are using it for impersonal Brahman, you're getting a karmic reaction, you're not free. Clear? Only and only devotional service to the Supreme Lord can save you from any reactions of karma. Okay? Next verse. Atho Mahabhago Bhaga Atho Mahabhaga Bhavana Amoghadrik Bhavana Mogadrik Amoghadrik Amogadrik Shuchi Shravaha Satyo Shuchi Shravaha Satya Rato Dhrita Vrataha Rato Dhrita Vrataha Guru Kramasyakila Bandha Uru Kramasyakila Bandha Muktaye Samadhina Smaraha Muktaye Samadhinan Smara Nusmara Tada Vicheshatitam Tad Tada Visheshitam. Yeah. दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है, the Sanskrit as well as the English. Tada Vicheshtitam Tada Vicheshtitam. Titam. Yeah. Vicheshtitam. Translation. Hare Krishna. O Vyasdev, your vision is completely perfect. Your good fame is spotless. You are firm in vow and situated in truthfulness. And thus you can think of the pastimes of the Lord in trance for the liberation of the people in general from all material bondage. Yeah. So people in general have a taste for literatures by instinct. Why have these great rishis and munis written down? इतने ग्रंथ लिखे क्यों गए? वेद लिखे क्यों गए? क्योंकि human being को ग्रंथ पढ़ने की, what is the right word? लोगों को लत है पढ़ने की. People want to read something. People want to hear some stories. People want to enjoy hearing some literature. ये एक human tendency है. उनके कानों को, this is the lust of the ear, that I want to hear. मुझे कुछ
चटपटी अच्छी चीज सुनाओ. You know, it is the ear craves. इसलिए उन्होंने ये ग्रंथ दिए, so that the lust of the ear can get purified. If you use it in hearing the glories of the Lord, then your lust for hearing Gram Katha and for hearing all other juicy gossip and non-devotional literature will slowly go away. So people in general have a taste for literature by instinct. They want to hear, they want to read from the authorities, something about the unknown. है ना, लोगों को मिस्ट्री बहुत पसंद है, अननोन चीजें के बारे में जानना बहुत पसंद है. But their taste is exploited by unfortunate literature which are full of subject matter for satisfaction of the material senses. है ना, जो बिकता है वही बनता है. मार्केट में वही चीज आती है जो परख लिया जाता है कि people are going to lap this up. So ये टेंडेंसी एक बार पता चल गई लोगों की that they want to hear something, the atheistic or the asuric people with asuric tendencies exploit this desire of the common innocent man by putting all kinds of nonsense literature in the market. Such literatures contain different kinds of poems, philosophical speculations, more or less under the influence of Maya. And ultimately, it just gives you some kind of sense gratification. It gives you some taste, some enjoyment for some time. And then you throw that book and you want another book. You will not feel like reading the same book twice. It's mundane literature ka. Isn't it? Once you read the book, you want to pass it on to a friend. Ab tu padh le, maine padh li. Give me something more. Isn't it? That's not true for the Vedic literatures. ये जो कृष्ण कथा है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. Still we want to hear the same thing over and over and over and over again, and you are getting more taste out of it, and somehow you are getting more realization out of it because it is transcendental, not mundane. Thus, the attracted living entities are more and more entangled in material bondage without hope of liberation for thousands and thousands of generations. केवल इस तरह का non-bona-fide literature पढ़ के ही people are getting so much more entangled in karmic reactions that there is no hope that even after thousands and thousands of janam, you will still be able to come back. You will be freed from its effects. इतना ही आपको bind कर रहा है. Just the simple activities of eating, hearing, seeing and speaking. केवल इनको what is the right word? Irresponsibly use करके you are being impacted more and more in karmic reaction. कभी सोचा था हमने इसके बारे में कि केवल किसी चीज को देख के I'm going to get karmic reaction? या केवल किसी चीज को सुन के you are going to get karmic reaction? मतलब ये जो दो कान उन्होंने दिए हैं हमें, what is expected from us is that we use them very responsibly. First, we find out why, how we have to use it, and then we use it that way. Similarly, these two eyes, double responsibility. जो दो हैं उनकी double responsibility है. You cannot use it just because मेरा है. It doesn't belong to you anyways. This body itself doesn't belong to you. आप सिर्फ यहाँ किराए पे रहते हो. It will be taken away from you after 80-90 years. So it doesn't belong to you anyways. तो अगर आप किराए पे रहते हो, जब आपको मकान खाली करना होता है, मकान मालिक आके चेक करता है ना. पूरा मकान चेक करता है, आपने कुछ डैमेज तो नहीं किया, डिड यू यूज इट रिस्पॉन्सिबली. और अगर आपने कुछ वहां डैमेजेस किए होते हैं, ही गिव्स यू अ बिल, आपकी सिक्योरिटी में से काट लेता है. Why so? And why does he do that? Because he's expecting that you will live in that house responsibly, knowing that you don't own it. Isn't it? आप ओनर की मेंटालिटी से उस घर में ना रहें. आप इस मेंटालिटी से रहें कि ये घर मेरा है, मैंने आपको दिया है, और आप रहें. लेकिन आप इसमें ऐसे रहें कि जब मैं इससे वापस मांगूं तो आप मुझे उसी कंडीशन में दें जिस कंडीशन में मैंने आपको दिया था. यही मेंटालिटी हमें इस दुनिया में जीने के लिए हम आए हैं. इसी मेंटालिटी के साथ आना है कि हम यहाँ पे किराए पे आए हैं, थोड़ी देर के लिए आए हैं,
और हमें कुछ चीजें दी गई हैं. And the first verse of Ishopanishad, Ishavasya, says, Magritah kasya sviddhanam. Only use as much quota as is allotted to you. Do not use quota that belongs to somebody else. ये मेंटालिटी तभी आएगी जब आप ये सोचकर इस कॉन्शियसनेस में रहोगे कि मैं यहाँ पर किराएदार हूं, मैं ओनर नहीं हूं, ओनर कोई और है. एंड आई एम टेम्पररी हियर. कितनी हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा कि नहीं? इसीलिए नॉलेज इज कॉल्ड पावर. जब ये नॉलेज आपको है तभी आप ये इस तरह का एटीट्यूड बना सकोगे, तभी आप इस तरह का कॉन्शियसनेस बना सकोगे. और दिस विल डायरेक्टली अफेक्ट हाउ यू स्लीप, हाउ यू ईट, what you see, what you hear, what you smell, what you speak. Isn't it? इनको जिम्मेवारी से यूज करना है. So, Sri Narad Rishi, being the best among the Vaishnavas, is compassionate towards us, हम जैसे unfortunate victims of worthless literatures. And thus he advises Sri Vyasadeva to compose transcendental literature, which is not only attractive, but can also actually bring liberation from all kinds of bondage. और यहाँ पर आता है the role of these Vaishnavas. They are so compassionate, so compassionate. They have understood the problem of the world. और वो क्या करते हैं? Instead of saying, yes, he's committing such a big irresponsibility, punish him. No. उनका compassionate heart क्या सोच रहा है? इनको कैसे निकालें, इनको help कैसे करें इस lust से of hearing all kinds of mundane literature, of seeing all kinds of mundane activities. क्या? तो वो नारद मुनि व्यासदेव के पास, अपने शिष्य के पास आ रहे हैं, कह रहे कोई ऐसा लिटरेचर क्रिएट करो जो इनकी ये जो डिजायर है टू हियर ऑल काइंड्स ऑफ मंडेन स्टोरीज, उसको सेटिस्फाई कर दे. एट द सेम टाइम वो ट्रांसेंडेंटल हो, ताकि वो सुनकर इनके ये जो इरादे हैं, जो इनके डिजायर्स हैं, ये प्योरीफाई हो जाए. सो कैन यू प्लीज क्रिएट this kind of a transcendental literature describing the glories of the Lord, so that it can liberate them from the bondage of misusing the senses. So beautiful. Srila Vyasadeva or his representatives are qualified because they are rightly trained to see things in the true perspective. So Srila Vyasadeva and his representatives are pure in thought due to their spiritual enlightenment, fixed in their vows, due to their devotional service, and determined to deliver the fallen souls rotting in material activities. कल मैंने एक क्वेश्चन के जवाब में 3 चीजें बोली थी: उत्साह, निश्चयात, धैर्य. You need these 3 things in devotional life, and it is all the 3 things are there. Vyasadeva or his representatives are qualified because they are rightly trained to see things in the true perspective. So there is utsah because they are rightly trained. So they are excited to create such literature so that the ignorant fools of this world can be delivered. Then nishchayat, they are fixed in their vows of their devotional service. मतलब अपनी भक्ति की जितनी भी सेवाएं हैं उसमें they are निश्चयात, fixed, and determined to deliver the fallen souls rotting in material activities. The fallen souls are very eager to receive novel information every day. इसलिए तो पेपर, न्यूज़पेपर का चलन है, क्योंकि रोज कोई नई खबर सुनने की एक लस्ट है इंसान के अंदर. आज नया क्या हुआ? I want to hear. So they are very eager to hear novel information every day. And transcendentalists like Vyasadeva or Narad can supply such eager people in general with unlimited news from the spiritual world. Navayovanam. So every day is a new story. Every day is in matlab
it is said that Anant Shesh, जिनके millions of hoods हैं, जिससे वो shade दे रहे हैं to Mahavishnu who is sleeping on the belly. वो जो millions of hoods हैं, each hood is speaking the glories of Mahavishnu since Adi Kal, time immemorial, from the moment they were created, which is कोई इसको ट्रिलियन कोई वैल्यू नहीं दे सकते कोई शब्द नंबर ही नहीं बना है तो और अभी तक भी वो इतने अनादि काल से उनको उनकी ग्लोरीज को डिस्क्राइब करते आ रहा है विद न्यू वर्ड्स अभी तक भी वो खत्म नहीं हुई है डिस्क्रिप्शन इतनी वैरायटी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि वो आदिकाल से विष्णु की एक्टिविटीज को क्वालिटीज को all the millions of heads are trying to describe him and still the description is going on. He has not even begun. There's so much left to say. So there is no shortage of any new information, variety or story or knowledge in the spiritual world. It can be eternally and unlimitedly supplied to the jivas for them to describe, satisfy the lust of their ears. So in the Bhagavad Gita, it is said that the material world is only a part of the whole creation. And that this earth is only a fragment of the whole material world. There are thousands and thousands of literary men all over the world, and they have created many, many thousands of literary works for the information of the people in general for thousands and thousands of years. Unfortunately, none of them have brought peace and tranquility on earth. ये बात है सुनने वाली. आप और हम बचपन से विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, थॉमस और कौन है इन ऑथर्स के पोएम्स भी याद करते आए हैं, इनकी हम स्टोरीज भी सुनते आए हैं, इनके ऊपर हमने इतने एग्जाम्स दे लिए और कितनी जनरेशंस को हम ये सिखा चुके हैं, है ना? हमारी जनरेशन, हमारे बाद की बच्चों की जनरेशन, now even the grandchildren, yet have these poems contributed in creating good character in children in any way? Or have they reduced the stress in the world or the conflict in the world? It cannot be achieved with mundane literature. जितना मर्जी पे हमें glorify कर करके बताएं that these were they were genius poets and genius authors, but the subject matter of their work was mundane. So very, very interesting. कि कभी भी peace और tranquility नहीं आई, जबकि इनकी poems more than 100 years or 200 years or 300 years से सुनी और सुनाई जा रही हैं. This is due to a spiritual vacuum in those literatures. Therefore, Gita and Bhagavatam are specially recommended to the suffering humanity to bring about the desired effect of liberation from the pangs of material civilization, which is eating the vital part of the human energy. केवल ये दो सुन लें, गीता और भागवतम. Gita, spoken by the Lord himself, recorded by Vyasadeva, and Bhagavatam is the narration of these activities of the same Lord Krishna, which alone can satisfy the hankering desires of the living being for eternal peace and liberation from misery. So, this is a very strong statement of the Shastra. कि आप जितना मर्जी मंडेन लिटरेचर सुन लो, चाहे वो शूरवीर कथाएं हो, चाहे वो हिस्टोरिकल अकाउंट्स हो, इंडिया की ही आप अगर आप हिस्ट्री के बारे में सुन लें, छत्रपति शिवाजी या जो भी है, रानी लक्ष्मीबाई. Yes, true, we should know about these histories, but this is not going to satisfy the pain in your heart, the fear in your heart of death, the fear of the unknown. These literatures are not going to bring you peace and relief from the pains of material existence. Only and only Katha of the Supreme Lord is going to make you fearless. This is a very important statement, right?
So हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, we may get so many degrees, हम इतनी सारी किताबें भी पढ़ लेंगे, लेकिन हमें satisfaction नहीं मिलेगा when we are old and on our deathbed. इतनी सारी डिग्रीज भी अगर हम इकट्ठी कर लेंगे, हमने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होंगी, तब भी there will still be fear in your heart and a thirst in your heart on what was missing, why am I still not feeling complete. So better to use your time in hearing transcendental subject matter than mundane literature. No one else can either know or describe the acts of the Lord, even if they speculate on the subject for many, many years. The descriptions of the Bhagavatam are so precise and accurate that whatever has been predicted in this great literature 5,000 years ago is now exactly happening. Therefore, the vision of the author comprehends past, present, and future. Such liberated persons as Vyasadeva are perfect, not only by the power of vision and wisdom, but also in oral reception, thinking, feeling, and all other sense activities. A liberated person possesses perfect senses, and with perfect senses only can one serve the sense proprietor Rishikesha, Sri Krishna, the personality of Godhead. Srimad Bhagavatam, therefore, is the perfect description of the all-perfect personality of Godhead by the all-perfect personality Srila Vyasadeva, the compiler of the Vedas. In short, what he's saying is that a liberated, self-realized person like Vyasadeva, because he is self-realized and he is a perfect devotee of the Lord, so in all his activities, when he's thinking, when he's feeling, when he's writing about the Lord, he is in complete perfection. और ऐसे ही पर्सनालिटी से जब हमें कोई ग्रंथ मिलता है, then that granth is able to satisfy our senses completely and also satisfy the senses of Rishikesha. Hence, transcendental literature ही सुनना चाहिए. Any questions? So, since we have less time, it is very important किस तरह का literature पढ़ने में हम समय लगा रहे हैं अपना. Yes, as students, we have to learn our subject matter. But after a point, there is a limit to how much material information and knowledge you want to collect, even if it is for the sake of working or a job, because it's not going to get you relief from the aches of the heart. And if you have limited time on this planet, you may want to rethink how much time you want to spend on your job-related work and how much time you want to spend on transcendental literature, because transcendental literature can save you from death, not your job or your bank balance. Therefore, Prabhupada used to say, read at least 1 hour, at least 15 minutes before going to sleep. Garam दूध का 1 cup, साथ में 15 मिनट कृष्णा बुक पढ़ के ही सोइए. And he said, I guarantee you that you will see Krishna in your dreams. That's the perfection of life. अगर dreams में भी आ गए, what more do you want? But अगर आप इतने व्यस्त बना लिया आपने अपना जीवन कि मेरे पास ये भी करने का समय नहीं है, then now is the right time to rethink and readjust your life before it is too late. Right? Okay, any questions? Any realizations? Anything you want to share about today, what you heard, what affected you, or what really made a difference? जो आपको अच्छा लगा, या आपको क्या समझ आया? Yes, Anu? Very small and
but it is very noticeable also. Like ever since childhood, actually, we were engaged in reading so many books written by famous authors, we might have read lots of poems and all. Understanding that what we are reading, I mean, the books by Shakespeare, Charles Dickens, Alexander Dumas, George Bernard Shaw, and names are like endless to take, but we never realized that these literature are actually not going to fix up any of the problems of our life. It is just collection of mundane knowledge and to be passed on to other person. That's so practically written. I mean, I have realized it today that the real knowledge lies here. Yeah. Not only that, karmic reaction भी इकट्ठे कर रहे हो साथ साथ by reading all that literature. Don't think it's just a simple reading. कुछ नहीं होगा. So many things are being added. चित्रकूट आपका जो खाता लिख रहे हैं उसमें सब कुछ ऐड हो रहा है. क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो और क्या बोल रहे हो. सिर्फ एक चीज की वो है, क्या सोच रहे हो. somehow कलयुग में उसको थोड़ा सा उन्होंने रिलीफ दे दिया है कि चलो अगर ये सोच रहे हैं लेकिन उस पर करते नहीं है तो लेट देम नॉट गेट द कार्मिक रिएक्शन. द्वापर तक तो जो सोच रहे हो गलत उसका भी कार्मिक रिएक्शन जुड़ रहा था. कलयुग में वो कह रहे हैं बेचारे वैसे ही है. आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक पीड़ाओं से ग्रस्त है बेचारों को, थोड़ा रहम करो. सोचने के लिए हम इनको चलो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं देंगे. So you can now, does that at least make you realize कि कितनी जिम्मेवारी से हमें जीना है रोज. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. You can't just do what you like. You can do because you don't see anybody taking an account. But यही तो शास्त्र चक्षु है कि आप देख नहीं सकते लेकिन हो रहा है. आप कैमरा दिख नहीं रहा है but you are being captured and it is being clicked. It's a hidden camera. 33 करोड़ देवी देवता कौन है? विटनेसेस हैं एक्चुअली. दे आर विटनेसिंग व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग. एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड. So you have to live very, very, and all of this you can get freed from all this responsibility if you just surrender to the feet of a guru and agree to come under his shelter. Immediately the guru protects. He will push all of them back and say, okay, he is now under my protection. And they all take a step back. Because Vaishnavas are even higher than Brahmanas. और वो भी प्रामाणिक वैष्णव, प्रामाणिक परंपरा से आए हुए. So you may really want to consider how much longer are you going to take to surrender to the Guru. Because you are accumulating more and more and more. Okay. Mataji, Yes. today I read this second canto 6.10 Bhagavatam. So in that it is saying that ब्रह्मा जी जो है भगवान की विराट रूप के हर एक अंगों में क्या क्या है बता रहा है. So in that verse it is saying that भगवान की पीठ है, जो भगवान से विमुख है वो भगवान की पीठ की तरफ जाता है. Yes. और जो भगवान के सन्मुख है वो भगवान के फ्रंट में है. So इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन उसमें भी दिया है that कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटतम माया करे झपटिया. मतलब कृष्णा को भूल गए तो माया के ट्रैप में हो ही हो. देयर आर ओनली टू ऑप्शंस आर देयर, ओनली कृष्णा, आइदर कृष्णा और माया. कोई ऑप्शन ही नहीं. थर्ड ऑप्शन, देयर इज नो थर्ड. तारे माया झापटी अंदर है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. माया छोड़ेगी ही नहीं किसी को. अगर आप कृष्णा की सेवा में नहीं हो तो माया विल नॉट लीव इन एनी केस. आप मंडेन नॉलेज पढ़ रहे हो या फिर आप सेल्फ रियलाइजेशन के आप ब्रह्मा मतलब कोई और नॉलेज भी आप पढ़ रहे हो,
या फिर आप ब्राह्मण को पढ़ रहे हो, whatever, कभी भी आप माया में ही, unless you are not in the service of Krishna, you are in Maya. Yeah. क्लियर इंडिकेशन। और उस श्लोक में माता जी ऐसे भी किया है कि पश्चिम मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में लिखा हुआ, मतलब पश्चिमा मतलब जो वेस्ट में है, दैट इज द बैक साइड ऑफ कृष्णा, दैट इज फुल ऑफ माया, एंड हम जो ईस्ट में है, वी आर इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, बट स्टिल हम भी चाहते हैं कि हम वेस्ट में जाए, माया की गोद में जाके बैठे। We pay so much money to get citizenship. यहाँ की citizenship. You got देव भूमि पे जन्म लेने के बाद हम कह रहे हो ग्रीन कार्ड मिल जाए और वो कनाडा का क्या है PR मिल जाए। नहीं नहीं, हमें कृष्ण की पीठ पे भेजाओ। उनकी पीठ पे जाके खड़े हो, उनके सामने नहीं खड़े होना हमें। And when devotee asked Prabhupada that, Prabhupada, how much time it will take to surrender Krishna? 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, so one moment, आप पीठ से तुरंत सामने आ सकते हो, once you surrender. And as you said, Mataji, Guru is the only source कृष्णा के सम्मुख आने के। Thank you so much, Himangini, for summarizing both the verses so nicely. 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, कोई लंबी लिस्ट नहीं है कि ये करके आओगे तो ही सरेंडर करने को मिलेगा। नो, सिर्फ निश्चय चाहिए। That's it. निश्चय। Okay, I want to surrender. बहुत हो गया, enough as a enjoyer. Now let me be a saver. Enough as a controller. Now let me be controlled. Yeah. Thank you. Anybody else wants to share anything? Or we can just have the cameras on so that we can say bye to each other. वैसे भी थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। माता जी, आई वांट टू आस्क कि जो सर्विस आपने दी है फॉर दैट ओनली रिसाइटेशन ऑफ द आरती, सो इट शुड बी गो टू द बाय टर्न ना, लाइक टुडे आई डिड, फिर फॉर द नेक्स्ट वन लाइक एनीबॉडी हु इज लाइक बता देंगे तो आई कैन राइट द नेम इन द लिस्ट। आई विल मेक अ लिस्ट एंड आई राइट डाउन द नेम्स। बिल्कुल। सो आपकी सेवा होगी, अभी आप पूछ सकते हैं, और अगर अभी किसी ने नहीं बताया then you will have to call them to find out who will want to do. Okay. Hare Krishna, Dandvat Pranam Mataji. Today I joined late, sorry. No worries. So आपने अभी ज्वाइन किया? No, I joined at 4:30 actually. Okay, that's okay. So Bharti Mataji, Hare Krishna. I give my name for next turn. Okay, thank you. इनको कौन सी आरती करनी है वो आप इनको कॉल करके बताएं, पूछें whether she knows what to do, where to do, how to do. If she doesn't have, इनको भेजें, all those coordinations. Okay. And reminder a day before the class that please come. किसी कारणवश क्लास अगर नहीं अटेंड कर पा रही हैं तो alternative, somebody else in her place, like that. तो जी वो खिचड़ी दिखा के ही आरती करेंगे ना, तो वर्ड्स मिस नहीं होंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। डर नहीं रहेगा। हाँ, वो बहुत अच्छा आइडिया, हम यही कर लेंगे, डिस्प्लेड एंड यू कैन जस्ट सी इट एंड स्पीक। तो दो और क्या कहते हैं, सेंसेस आर बीइंग इन्वॉल्वड, सीइंग एंड हियरिंग, तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। Yeah, so screen sharing, the one who is doing it can share the screen. Can that be done? Yes. ठीक है? Okay. Anything else? All right. So we will meet on Thursday now for Bhagavad Gita's chapter 8th chapter. 8. We are in the 8th chapter. Yeah, which is going to finish very quickly. So if you have missed the last class, recording suniye, come up to date so that you don't miss the link. Because at the end of chapter 8, we will have a small quiz. Okay? Okay, anything else anybody wants to say? If not, thank you very much for joining. Pancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo anantakoti vaishnavin ki. See you all in Narsimha Chaturdashi for welcome seva.
please come and do welcome seva for Lord Nrsimhadev and participate in the yajna. If you want protection from Maya, please surrender to the feet of Lord Nrsimhadev. Okay? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.